দিল্লীৰ মন্দিৰত পৰিব হাতুৰীৰ কোব। বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বীৰ মন্দিৰতো পৰিব হাতুৰীৰ কোব। দিল্লী চৰকাৰৰ ক্ষমতা নিজৰ হাতলৈ নিলে উপৰাজ্যপালে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰিকল্পনা সদৰি মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশীৰ। দিল্লীত পুনৰ শাসনলৈ আহিলে পূজাৰী গ্ৰন্থী সন্মান যোজনাৰ অধীনত মন্দিৰৰ পূজাৰী আৰু গুৰুদ্বাৰৰ গ্ৰন্থীক মাহে 18,000 টকাকৈ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আম আদমী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। সোমবাৰে এই ঘোষণা কৰিছিল দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তদুপৰি মঙলবাৰৰ পৰা কনট প্লেচৰ হনুমান মন্দিৰৰ পূজাৰীৰ পৰা পঞ্জীয়নো কৰাৰ কথা আছিল আম আদমী পাৰ্টীয়ে। দিল্লীৰ শাসকীয় দলটোৰ এনে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পাছতে দিল্লীৰ মন্দিৰ আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী মন্দিৰ ভঙাৰ পৰিকল্পনা কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰে কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশীয়ে। ইংৰাজী নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে এখন সংবাদমেলযোগে এই অভিযোগ কৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশীয়ে। देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के हर मंदिर के हर पुजारी को, दिल्ली के हर गुरुद्वारे के हर ग्रंथी को 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जो दिल्ली के अलग अलग हिस्से में मंदिर तोड़ने का, हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने का, बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल तोड़ने का आदेश दे रही है। পূৰ্বতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত গঠিত এখন ধৰ্মীয় সমিতিয়ে মন্দিৰ ধ্বংস, স্থানান্তৰ আদি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। এই সমিতি আছিল দিল্লী চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ অধীনত। সংবাদমেলত এই কথাও প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশীয়ে। दिल्ली में एक रिलीजियस कमेटी होती है, जो मंदिरों की अगर कहीं पे शिफ्टिंग होनी है, अगर किसी भी धार्मिक स्थल का डेमोलिशन होना है, ये सारे डिसीजंस रिलीजियस कमेटी लेती है। ये रिलीजियस कमेटी जब से बनी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे रिलीजियस कमेटी का गठन हुआ था। ये रिलीजियस कमेटी दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर के अधीन आती थी और पिछले साल तक जो भी रिलीजियस कमेटी के फैसले होते थे, उसको पहले होम मिनिस्टर के सामने रखा जाता था और अगर दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर उसको अप्रूव करें, तभी किसी प्रकार का एक्शन, किसी प्रकार की तोड़ फोड़, किसी प्रकार की शिफ्टिंग किसी भी धार्मिक स्थल या मंदिर की होती थी। ধৰ্মীয় সমিতিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশীয়ে লগতে কয়, দিল্লীৰ উপৰাজ্যপাল বিনয় কুমাৰ ছাক্সেনাই যোৱা বছৰ নিৰ্দেশ দিয়ে যে ধৰ্মীয় স্থলী ধ্বংস আইন শৃংখলাজনিত বিষয়। এই বিষয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু উপৰাজ্যপালৰ লগত জড়িত। সেয়ে এই বিষয়ত দিল্লী চৰকাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দিল্লীৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই। लेकिन पिछले साल दिल्ली के एलजी साहब ने यह आदेश दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का डेमोलिशन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होने के नाते केंद्र सरकार के अधीन आता है और एलजी साहब के अधीन आता है। उन्होंने यह आदेश दिया कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होने के नाते दिल्ली की चुनी हुई सरकार का, दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर का, दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर का इस मुद्दे से कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए अब जो रिलीजियस कमेटी है, वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आती है। ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশীয়ে কোনো মন্দিৰ নাভাঙিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিজেপি চৰকাৰক। কাৰণ মন্দিৰ এটাৰ প্ৰতি মানুহৰ যথেষ্ট আস্থা থাকে। মানুহৰ এনে আস্থা নাইকিয়া কৰিবৰ বাবেও তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনায়। आज भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब से, दिल्ली के लोगों की तरफ से ये अपील करना चाहूंगी कि इन मंदिरों से, इन धार्मिक स्थलों से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर आप इन मंदिरों को तोड़ने जाएंगे
तो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी। और मेरा एलजी साहब से और बीजेपी की केंद्र सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि किसी भी मंदिर को, किसी भी धार्मिक स्थल को, किसी भी बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल को, हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा ना जाए, डिमोलिश ना किया जाए, क्योंकि उससे लोगों की भावनाएं आहत हों। দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগত মন্দিৰ ভঙাৰ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশীয়ে ৰাজহুৱা কৰি কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যেন মাৰিলে এটা মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰোক। কিন্তু মন্দিৰ নাভাঙিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশীয়ে জনোৱা আহ্বান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা দিল্লীৰ উপৰাজ্যপালে গুৰুত্ব দিব নে নিদিয়ে সেয়াও হৈ পৰিছে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।